the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Welcome you all the students today in this linguistics class. And today we are here today studying morphology, which means study of words. Sometimes we believe that there is nothing less than a word. Today we are going to learn that there are parts in a word. Words are having divided parts. If we study, words are composed of different parts. So let's study today about morphology, and this study is called morphology. कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स नहीं सोच सकता कि वर्ड्स से भी जो है वो कम कोई स्टडी हम करेंगे लैंग्वेज की, और ज़ाहिर मतलब लेटर्स तो एक करते ही हैं, मगर वर्ड्स से कम छोटे या कुछ जो है वो हिस्से मिले हुए जो है जिनकी प्रॉपर मायने होती है, उनकी भी जो है वो एक स्टडी होती है। वर्ड्स को हम डिवाइड करके भी जो है वो हिस्सों को स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। आए आगे जो है वो इसको आज स्टडी करेंगे। यू सी देयर इज अ वर्ड morphology, and this word is actually divided into different parts: morph, o, log, and y. It means to say this word itself is composed of different parts of phonemes, of different parts the smaller parts, that is morph, o, log, and y. Morph is a base word. Again, log is also a base word. There are two base words in this just one morphology, and o is a connected vowel here, and y is a suffix, right? And log, which is a base word, which means study of. When we are talking about the study of words, study of morphemes, study of linguistics, study of biology, so it is likewise. So you see the word morphology itself, हम जो है वो यहाँ से शुरुआत करते हैं इस morphology word से, कि morphology word जो है वो किस तरह से आप देखें कि हमने इसको मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं, कि ये वर्ड भी जो है वो दो दो बेस वर्ड्स और कनेक्टर्स और सफिक्सेस मिला के ये वर्ड बना हुआ है। और आप मॉर्फ की बात करें तो मॉर्फ जो है वो बेस वर्ड ये ग्रीक है, मॉर्फ मींस फॉर्म, और ओ की बात करें तो ये कनेक्टर वॉवल है, और फिर लॉग की बात करें तो ये स्पीच वर्ड, अकाउंट, रीज़न, तो ये सब कुछ। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज़ actually study of the divided parts by which a word is made up of. तो आगे जो है वो और स्टडी करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कि what does it mean by morphology. Here if we are going to learn about, it is derived from Greek word morph. ये जो है वो ग्रीक वर्ड मॉर्फ से लिया गया है, मीनिंग फॉर्म, जिसकी मायने फॉर्म है, कोई फॉर्म, एंड लॉगस मीनिंग वर्ड, मीन्स एक जो है वो मॉर्फोलॉजी की मायने फॉर्म और वर्ड की है। दस इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स आर वर्ड फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स, यानी वर्ड्स के जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ड्स की जो स्टडी होती है, या मॉर्फीम्स। मॉर्फीम एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर दिस डेफिनेशन, इस मॉर्फीम के बारे में भी सीखते हैं। इसकी मायने यही है वर्ड फॉर्म, राइट, और स्ट्रक्चर, वर्ड्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि मॉर्फोलॉजी जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों से बना हुआ है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से जो है वो मॉर्फोलॉजी के आप देखें मुख्तलिफ हिस्से हैं, और इसकी स्टडी जो है वो वर्ड फॉर्म्स और मॉर्फीम्स और स्ट्रक्चर जो है वो है। इंग्लिश, द इंग्लिश वर्ड अनफ्रेंडली, फॉर एग्जांपल वर्ड है अनफ्रेंडली, is formed from friend by adding prefix un and suffix ly. So the word unfriendly ये एक word है, और it is made up of formed from friend, इसका जो base word है friend है, और फिर prefix un है, और फिर suffix ly है। Mean to say this unfriendly is made up of three morphemes or word forms,
तीन जो है वो मॉर्फीम्स या वर्ड फॉर्म्स हिस्सों से बना है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो स्टडी जो है कि भाई अनफ्रेंडली वर्ड जो है वो तीन तीन हिस्सों से कहाँ से, इसका एल वाइज की क्या मायने है, यहाँ पे यू एन यानी अन यानी नॉट की मायने है, तो फ्रेंड जो है वो कहाँ से आया, कैसे, हिस्टोरिकल स्टडी. सो दिस ऑल स्टडी is actually called morphology. Again, for example, justice, उसका अपोजिट अगर कहें कि इनजस्टिस. अब ये देखें अन और इन जो है वो इसकी मायने होती है नॉट यानी ना. अब जैसे जस्टिस इनजस्टिस, फ्रेंड अनफ्रेंड, जस्टिस इंसाफ, इनजस्टिस ना इंसाफी यानी इंसाफ ना होना. अन या इन की मायने नॉट की है. फ्रेंड दोस्त, अनफ्रेंड यानी दोस्त ना होना. काइंड अनकाइंड, मेहरबान या मेहरबान ना होना. तो अन की मायने यहाँ पे एग्जैक्टली मीन्स नॉट. सो दिस स्टडी स्टूडेंट्स इज the area of morphology. Let's study more. Here again we are talking about a word is single unit of language. कभी कभार हम समझते हैं कि word जो वो single unit है language के अंदर, which means something and can be spoken or written, जिसको हम पढ़ते हैं और लिखते हैं. These are minimal units that cannot be further subdivided into meaningful units. ये ऐसे मिनिमल यूनिट्स हैं, इससे ज़्यादा जो है मीनिंगफुल यूनिट्स नहीं बनते. सच मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शंस आर जनरली रेफर्ड एज मॉर्फीम्स. मगर इस तरह के जो छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स हैं उसको हम मॉर्फीम कहते हैं, वर्ड्स नहीं कहते, क्योंकि वर्ड्स भी जो है वो मॉर्फीम्स के बने हुए होते हैं. अभी जो हम है यहाँ पे हम मॉर्फीम्स और वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब देखें किस तरह से जो है वो वर्ड और मॉर्फीम. ये देखें वर्ड, वर्ड है अनलाइकली, मगर ये जो है मॉर्फीम्स का बना है. मॉर्फीम्स कितने मॉर्फीम्स है, अन एक, लाइक दो एंड एलवाइड तीन. Means this word is composed of three morphemes, right? So there is difference between morpheme and words. Words exactly is the study of morphemes, right? So while the word carpet is of a single morpheme, the word car and pet are independent morphemes. Again, these are two morphemes, can be individually if we get their meaning, क्योंकि कार अपनी मायने रखता है और pet अपनी मायने रखता है, और कारपेट यहाँ पे कहें तो वो सिंगल मायने रखता है. So if we are talking about, but the word carpet has nothing to do with the meanings of car and pet. Means कारपेट की अलहदा मायने है, तो फिर अगर इसको डिवाइड करके दो अलहदा जो है वो मॉर्फीम्स की बात करें तो वो अलहदा मायने यहाँ पे रखते हैं. कारपेट इज अ मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट बाय इटसेल्फ, और कारपेट अपने आप भी एक छोटा सा मीनिंगफुल यूनिट है. अब यहाँ पे जो है वो ये डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो कि आ रही है, ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स पढ़ के, वो है अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स और हाउ मॉर्फीम्स ज्वाइन टू फॉर्म वर्ड्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. So this is the study of morphology, a systematic study of morphemes. Morphemes की एक systematic study जब हम कर रहे होते हैं, how morphemes join to form words, और morphemes किस तरह से जो है वो words बनाते हैं, इस स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. इन अ वेरी सिंपल एंड टर्स वे इनटू उर्दू. अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें मॉर्फीम पढ़ते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स. तो मॉर्फीम्स को भी थोड़ा सा सीख लेते हैं. पहले भी हमने थोड़ा सा सीखा, मगर यहाँ पे देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. I have added its meaning, its definition, and some of the examples. It is smallest meaningful unit in a language. ये morpheme जो है वो smallest meaningful unit है, यानी ऐसा unit जिसकी मायने हो. For example, मैंने आपको बताया un जो है un, it is having a meaning not. I यानी मैं, मतलब ये this is the smallest meaningful unit is called morpheme. I is a morpheme, un is a morpheme. A morpheme cannot be divided without altering its meaning. यानी ये morpheme जब तक उसकी मायने तब्दील नहीं होती, वो जो है वो एक morpheme नहीं कहलाता. For example, for instance, kind is a morpheme. Kind मेहरबान, right, is a morpheme. Da is removed, the it changes to kin. Kin is also a morpheme, because kin, right,
यानी कोई जो है वो रिश्तेदार, ठीक, करीबी, और काइंड, मेहरबान। अब ये दो अलहदा मॉर्फीम्स हैं, हालांकि सिर्फ यहाँ से हमने डी निकाला हुआ है, मगर जो है वो काइंड इज अ मॉर्फीम एंड किन इज अनदर मॉर्फीम व्हिच हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज. Some words consist of one morpheme, like kind. Others are more than one. For example, the English word unkindness, right? So आप देखें कुछ मॉर्फीम्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं, मगर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो एक ही मॉर्फीम के होते हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं जो दो दो तीन तीन मॉर्फीम से बनते हैं. जैसे अनकाइंडनेस, ये एक वर्ड है, मगर इसमें देयर आर 3 मॉर्फीम्स, अन, काइंड एंड नेस. मीन्स एक वर्ड जो वो तीन तीन मॉर्फीम से बनता है. Consists of 3 morphemes: the stem kind, the negative prefix un, and the noun forming suffix nas. Morphemes can have grammatical functions. For example, in English, s in she talks is a grammatical morpheme. अब मॉर्फीम्स की एक तो हमने बात की कि वर्ड्स जो है वो मॉर्फीम्स से बनते हैं, यानी मॉर्फीम जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, मगर मॉर्फीम का एक और फंक्शन भी है एंड दैट इज ग्रामेटिकल फंक्शन. मॉर्फीम्स के ग्रामेटिकल फंक्शंस भी हैं. फॉर एग्जांपल अब देखिए ये एस है, शी टॉक्स में अगर हम बात करें इज अ ग्रामेटिकल मॉर्फीम, राइट. अब ये एस जो है वो वैसे तो टॉक होता है, मगर एस यहाँ पे आ गया, ये मॉर्फीम हो गया, क्योंकि एस लगाने से जो है यहाँ पे ग्रामेटिकल फंक्शन जो है वो सेंटेंस का तब्दील हो जाता है. अगर यहाँ पे होता आई तो होता टॉक, शी तो है टॉक्स, मतलब शी लगा तो एस. तो एस जो है इज अ मॉर्फीम, और ये ग्रामेटिकल मॉर्फीम है क्योंकि इट हैज़ अ ग्रामेटिकल फंक्शन. अगर कहीं पे मायने नहीं है तो मॉर्फीम्स ग्रामेटिकल फंक्शंस भी अपने आप रखते हैं, which shows that the word is the third person singular present tense form. इसका मतलब ये है. सो दिस इज आल्सो, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स एक और चीज़ पढ़ी कि मॉर्फीम्स डज नॉट मीन के स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स, बट मॉर्फीम्स आर हैविंग another function and that is grammatical function. Let's study its examples. Morphemes minimal units of meaning are new, recently made. So renew, tour and ist, tourist, right? So our grammatical functions like renew, renewed. अगर हम उसमें ईडी लगा दें तो रीन्यूड. अब ईडी की कोई मायने नहीं है, मीन्स इट इज नॉट द smallest meaningful unit, but it is a grammatical function. It is a morpheme. It is having a grammatical function, and new is having a meaning and re is having a meaning. Means these are the minimal meaningful units, and this is the minimal unit having grammatical function, right? So s again is having a grammatical function, like tour is tourists, tourists. So S is having a grammatical function. So these are two types of morphemes that we are going to learn today. Number one is having a minimal meaningful unit and is a grammatical morpheme having a grammatical function. Again students, we are coming here types of morphemes. Morphemes के types की बात करेंगे. There are two types of morphemes. Morphemes के two types हैं. Number one is free morpheme and number two is bound morphemes. Again, free morphemes are divided into lexical morpheme and functional morpheme. And bound morphemes are divided into derivational morphemes and inflectional morphemes. अब हम पढ़ेंगे कि free morphemes क्या होते हैं, bound morphemes क्या होते हैं, फिर free morphemes के अंदर lexical morphemes क्या होते हैं, functional morphemes क्या होते हैं, exactly derivational और inflectional morphemes क्या होते हैं. Let's study number one is free morphemes. Free morphemes that can stand by themselves as single words. It is also divided into two types. Number one, lexical morphemes. These morphemes are treated as an open class. Now this is the key word, open class of words, and some examples are here. Like boy, man, house, tiger, open. These morphemes are treated as open class. These are open class having words and their meanings. These are called lexical morphemes. Later there is a complete chapter
what are lexes and what are their functions, this is our next chapter that we are going to learn thereafter. In this just lecture we are going to learn about morphemes. So morphemes यहाँ पे ये देखें boy, man, house, यानी open class ऐसे words जो अपनी मायने आप रखते हो, such kind of words are called lexical morphemes. And number two, functional morphemes. Functional morphemes, this set consists of largely the functional words, यानी words के कुछ functions होते हैं, functional words होते हैं in the language, such as conjunctions, prepositions, articles, and pronouns like is and but, because, on, and near. Now here you could see conjunctions हैं, बहुत सारी conjunctions की मायने नहीं मिलती, but they have grammatical functions. Like prepositions exactly मायने नहीं मिलती, but they have grammatical functions. Like articles, a and the. Um, Obviously there aren't a particular meaning, but there are grammatical functions. So such type of morphemes are called functional morphemes. Now we have learned here in this slide two kinds of morphemes: lexical morphemes and functional morphemes. Lexical morphemes are open class morphemes having meaning complete, and functional morphemes are having functions in grammar in a language. This is number one, free morpheme. Let's study number two, that is the bound morpheme. This is the second type of morphemes. Bound morphemes cannot stand and the set of affixes which fall into bound category. It is also divided into two types. सो एफिक्सेस बहुत सारी जो होती हैं उनको हम बाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं. इसमें भी दो कैटेगरीज जो आ जाती हैं, जैसे कि ऑलरेडी वी हैव लर्नड. नंबर वन इज डेरिवेशनल मॉर्फीम. डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें जो प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, बेस वर्ड्स की स्टडी हम कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड डेरिवेशनल मॉर्फीम्स. मींस वर्ड्स आर derived from other smallest meaningful units are called derivational morphemes. These are used to make new words in the language and are often used to make words of a different grammatical category from the stem. These morphemes are consist of prefixes, base words, and suffixes. Like prefixes, or here you could watch unhappy. Base word is happy and u is the prefixes. So prefix and word, base word, unhappy. Injustice, in is a prefix and justice is a base word. So injustice. Like suffixes, like ION, ऐसे जो है वो हिस्से वर्ड्स के जो के वर्ड्स में बेस वर्ड के बाद लगते हैं वो सफिक्सेस कहलाते हैं, और प्रीफिक्सेस ऐसे हिस्से जो बेस वर्ड से पहले लगते हैं वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं. सो आप देखें ये पहले हिस्से हैं, ये बाद वाले हिस्से. ION पोल्यूशन में ये जो है वो शन या ION. ये बेस वर्ड्स की स्टडी होती है. दिस ऑल स्टडी इज कॉल्ड डेरिवेशनल मॉर्फीम. बेस वर्ड्स जो होते हैं जैसे रीड, ओपन, इसकी हम स्टडी करते हैं. इनमें जो है वो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस बनाते हैं. सो दिस स्टडी इज कॉल्ड डेरिवेशनल मॉर्फीम इनटू बाउंड मॉर्फीम. अब बाउंड मॉर्फीम का एक हमने पढ़ा काइंड, वो है डेरिवेशनल मॉर्फीम, और इसका दूसरा जो है वो काइंड है इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम. Inflectional morphemes, what are those? These are not used to produce new words in English language, but rather to indicate aspects of grammatical function of a word. Inflectional morphemes are used to show if a word is a plural or singular, if it is past tense or not. So if it is past tense, singular or plural, word is singular or plural, and if it is comparative or superlative form. Now see, inflectional morphemes are those morphemes which are having the study of plural, singular, tenses, first form of verb, second form of verb, right? Or comparative study of different things. Possessive forms होते हैं इसमें बहुत सारी. So such kind of a study is called inflectional morphemes. Here are the examples. English has 8 inflectional morphemes. अब हमारे ये English में 8 जो है वो
बिल्कुल फिक्स्ड जो है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं वो 8 हैं। एक तो नाउन्स में होते हैं, ज़ाहिर बात है ये सिंगुलर प्लूरल की जैसे कि हमने बात की। नंबर 2 वर्ब होते हैं जैसे कि EST, ING, ED, AN की बात की। और फिर एडजेक्टिव होता है EST और ER की जैसे कि हम बात करें। सो दीज आर कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स इनटू इंग्लिश। Now, students, we have learned about morphology, morphemes, and the kinds of morphemes. Let's study about allophones versus allomorphs. Yes, allophones we already have learned, students, in our previous class. If you want to learn about allophones, you could watch the video. Its link is given into description box. You could go through this link and watch the video about allophones. Right now we are going to talk about allophones or allomorphs क्या होते हैं और इन दोनों में differences क्या हैं. Already remember that we already have learned about allophones. Now our concern is to talk about allomorphs and then differences. The main difference between allophones and allomorph is that allophones are phonetic variations of phoneme. Allophones क्या होते हैं? Phonetic variations of phonemes, while allomorphs are phonetic variations of morphemes. The difference is here. ये भी वेरिएशन है, allomorphs भी वेरिएशन है, मगर ये वेरिएशन जो है वो फोनेटिक वेरिएशन ऑफ फनीम है, फनीम की वेरिएशन है, और ये मॉर्फीम की वेरिएशन है. ये मॉर्फ्स हैं तो ये मॉर्फीम की वेरिएशन. मॉर्फीम्स के अंदर जो वेरिएशन होगी वो हमारी एलोमॉर्फ कहलाएगी. और फनीम की जो वेरिएशन होती है, साउंड की वेरिएशन, आप हम पहले पढ़ चुके हैं इनटू द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स, that the variation in phonology is called allophone. The difference is here. Let's talk about more. Allophone versus allomorphs. जैसे कि हम पढ़ चुके, allophones are the phonetic variations of phoneme and allomorphs are phonetic variations of morphemes. Here are the differences. Phonemes में difference जैसे कि word है, sound है t. t जो है टॉप में और साउंड है तो स्टॉप में और है, राइट. टॉप, स्टॉप, top, stop, having different variation of sounds. So ये phoneme is the variation of sounds we call. So ये variation is called allophones. और यहाँ पे देखें t, d and id, right? In slipped and slammed and wanted. One thing we already have learned, ये ed जो है, ये जो पास्ट टेंसेस होते हैं, ईडी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, मैंने आपको बताया ईडी प्लूरल्स, ये जो स्टडी होती है ये हमारी मॉर्फीम्स में आ जाती है. अब ये मॉर्फीम्स हैं, ये ईडी ईडी ईडी, बट दीज मॉर्फीम्स आर हैविंग वेरिएशन, फनेटिक वेरिएशन. ये देखिए फनेटिक वेरिएशन इन मॉर्फीम. मॉर्फीम क्या है? ईडी. और इसमें क्या है? फनेटिक वेरिएशन. फनेटिक वेरिएशन यानी स्लिप्ड में जो है वो आखिरी साउंड टी का है, ट का, स्लिप्ड, राइट. ये ईडी का साउंड नहीं होगा, ट का होगा, स्लिप्ड. और स्लैम्ड, राइट. ये देखिए ड का साउंड होगा, स्लैम्ड, राइट. एंड वांटेड, इट. यहाँ पे ईडी जो है वो आईडी का साउंड दे रहा है. मीन टू से द सेम फनी मॉर्फीम ईडी, यहाँ पे ट का साउंड है, यहाँ पे ड का, यहाँ पे आईडी एड का, right. So this variation of phonetic variation of morphemes, these are morphemes, we're talking morphemes. और यहाँ पे ये study of phoneme, because यहाँ पे sound का difference था, यहाँ पे भी sound का ही difference है, मगर यहाँ पे ये जो ed है ये morpheme है. So here we are talking about morphemes. So this morphemes study is called allomorphs, and this sound variation is called allophone, in a very simple way. If you didn't understand, don't worry. Here are more examples. We are going to learn in detail what are allophones, and then we are going to learn what are allomorphs
morphs, and then again I'm going to tell you what are their differences and what are their similarities. What are allophones? Allophones we already have learned, but once again I'm going to make you understand that what are allophones. In the English language, some letters are pronounced differently depending on their position or placement in a word. For example, the L sound is pronounced differently in the words love and wool. We call these different sounds allophones. जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएशन इन साउंड्स, यहाँ पे लव में L और wool में L, love, la, wool, l. So here are two different sounds. This variation of sounds is called allophones. We call these different sounds allophones. Therefore, allophones can be defined as phonetic variation. इसको इसी वजह से हम phonetic variation कह रहे हैं, same phoneme. In other words, it is a type of, और ये phoneme एक ही है, means यहाँ पे ये wool, la, ये phoneme है, ये भी phoneme है, ये भी phoneme है, right? So in other words, it is type of phoneme that changes its sound depending on the spelling of the words. यानी यहाँ पे sounds का difference है, यानी यहाँ पे देखें L, यहाँ पे L, ये phoneme तो नहीं है ना, ये sound है, right? ओके, सो ये साउंड है और साउंड में वेरिएशन, सिर्फ साउंड में वेरिएशन. और एलोमॉर्फ्स में क्या था कि साउंड की वेरिएशन थी मगर वो उसके साथ मॉर्फीम भी था. यहाँ पे ये एल और ये एल मॉर्फीम्स नहीं है, ये एल और ये एल यहाँ पे फोन्स हैं, फनीम्स हैं, राइट, नॉट मॉर्फीम्स. So we call this variation of sounds is called allophones. Let's look at another example. Think of the consonant t and the sound it makes in the word stop. Now compare it with the pronunciation of t in the word top. Top in the later word, most native speakers use the aspirated form of t. However, substituting one allophone for another allophone of the same phoneme doesn't lead to a different word. It only creates a different pronunciation of the same word. Therefore, we describe allophones as non-contrastive. So here is another example, students, you could listen and understand. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी है जो कि एलोफोन की जो है वो एक्सप्लेनेशन है, आप इसको सुन सकते हैं. Let's study allomorphs क्या हैं. Again, I'm going to tell you in a very detailed way what are allomorphs. Allomorph is a phonetic variant of a morpheme. Morpheme की phonetic variation. In other words, it is alternative pronunciation of a morpheme. Alternative pronunciation of a morpheme in a particular context. Let's look at some examples to understand this concept more clearly. यहाँ पे हम फिर जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, allomorphs को. The plural form in English is good example of allomorphs. In written language, the form of plural morpheme is usually spelled as girls, spells, kicks, books. अब देखें ये s जो है वो अगेन हमने पढ़ा था कि ग्रामेटिकल फंक्शन होता है मॉर्फीम्स का. तो ये जो एप्पल्स में ये जो s है, यहाँ पे किक्स में s है, यहाँ पे बुक्स में s है, यहाँ पे कैट्स में, ये मॉर्फीम्स हैं. बट these are having different variation in sounds. मगर इनके साउंड्स में है तो एस, मगर साउंड्स में फर्क होगा. जैसे कि यहाँ पे ES, एस और ES जो है वो, जैसे बॉक्सेस, हाउसेस, बुशेस, ये ES, ये भी जो है वो हमारा. अब इनमें वेरिएशन है, वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशंस. दीज फॉर्म्स, कैट्स इज प्रोनाउंस्ड एज ज. यहाँ पे ये एस जो है कैट्स नहीं होगा, right? For example, cats is pronounced with a z, right? Cats. Kicks is pronounced with sa, right? Kicks. This is not cats, cats, z pronunciation. Kicks में sa pronunciation, kicks, not kicks.
किग्स नहीं होगा, कैट्स होता है, कैट्स। जब हम कहते हैं कैट्स तो लास्ट जो साउंड है वो ज का निकलता है। और अगर हम बात करें किक्स की तो किग्स ज का नहीं बल्कि स का निकल रहा है, किक्स। ये देखिए एस। बॉक्सेस जब हम बात करें तो इज बॉक्सेस, बॉक्सेस नॉट बॉक्सेस, बॉक्सेस नहीं होता, बॉक्सेस नो, वी प्रोनाउंस इट बॉक्सेस। यानी कि ये एस प्लस ये एस बॉक्सेस वाला एस, राइट, और फिर ये एस, दीज आर फनीम्स और दीज आर मॉर्फीम्स। और मॉर्फीम्स के जो है वो साउंड वेरिएशन है, यहाँ पे उसका साउंड और है, कैड्स में, किक्स में साउंड और है, इसका बॉक्सेस में साउंड और है। दिस वेरिएशन ऑफ साउंड इन अ मॉर्फीम इज कॉल्ड एलोफोन्स। These are allomorphs of same morpheme. They have different sounds but have the same meaning of more than one. Hopefully, students, this was very clear and in a very detailed manner. I told you what are allomorphs. Let's again have another example. अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो है वो जो टेंसेज होते हैं, पास्ट टेंसेज, इनमें भी जो है वो साउंड का डिफरेंस आ जाता है। ये भी जो है वो मॉर्फीम्स होते हैं, तो इनमें भी जब साउंड का डिफरेंस आएगा तो इनको भी जैसे स्लैप, स्लिप्ड, slammed and wanted. अब यहाँ पे ed is a morpheme, ed is a morpheme and wanted में ed is a morpheme, but these are having different pronunciations. Slipped da का sound है, slammed da का sound है, wanted id का sound है। यानी this morpheme ed in three words are having variation of sounds is called allomorphs. Hope that this was much clearer and understandable for all of you. Again, here is you could understand in a very easier manner with the help of this picture how id, da having in different words different pronunciations. So you could read it and could understand in a very easy way. लेट्स डेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एन। अब ये देखें जैसे कि ये एलोमॉर्फ्स, फॉर एग्जांपल एलोमॉर्फ्स, definite articles a and n are yet another example of allomorphs. They have the same meaning, but their difference is that a occurs before words that starts with consonant and n before words that begin with a vowel. So this is another example of allomorphs. Again, for instance, an apple, a house, a girl, an oath, right? Similarities. Hopefully this was a very detailed way I told you. Similarities देख लेते हैं कि एलोफोन और एलोमॉर्फ में क्या similarities हैं. Here we could see in both allophones and allomorphs the variation occurs. दोनों में variation है. Variation occurs due to their placement in word or phrases. Variation दोनों में है, allophone में भी है, allomorph में भी है. Substitutions in allophones of the same phoneme or allomorphs of the same morpheme do not form new words. और इसमें भी अगर जो है वो एक नया मॉर्फीम है, सेम मॉर्फीम है, यहाँ पे भी सेम फनीम है, और ये जो है वो अगर एलोफोन में जो है वो फनीम वही है और एलोमॉर्फ में वही फनीम है, तो कोई मतलब उसमें साउंड्स में वेरिएशन है, तो उसके बाद वर्ड्स नए वर्ड्स नहीं बनते बल्कि वही होते हैं। ये दो जो है वो सिमिलर डिफरेंसेस क्या हैं? एलोमॉर्फ्स आर फोनेटिक वेरिएशन, already we have learned, or phoneme, while allomorphs are phonetic variation of morpheme. This is phonetic variation of phoneme, allophone, and allomorphs are phonetic variations of morpheme, already we have learned. So here is again I'm repeating the same example we already have learned about.
Now, hopefully, students, this was a very comprehensive, detailed lecture in morphology. We have been learning an introduction to linguistics. This lecture is essentially for MA English and BS English students, those who have been learning introduction to linguistics. तो उनके लिए ये एक डिटेल्ड जो है वो lecture था. Again, we are going to learn key points discussed in today's lecture. Number one, we learned about introduction to morphology. हमने ये सीखा कि morphology जो है वो उसका क्या introduction था. Number two, what is morpheme? Morphology हमने यही पढ़ा था कि study of morphemes, right? और morpheme हमने पढ़ा कि minimal meaningful unit in a language. Even words भी जो है वो morphemes के बनते हैं. तो वो हमने पढ़ा था कि this is called the morphemes. We learned about types of morphemes today. We learned free morphemes, two types of morphemes are there, and monomorphemes. We learned lexical morphemes and functional morphemes, inflectional morphemes and derivational morphemes. फ्री मॉर्फीम्स जो थे वो लेक्सिकल मॉर्फीम जो मायने रखने वाले वर्ड्स होते हैं, फंक्शनल मॉर्फीम्स जो फंक्शन ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं, इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम्स जहाँ से हम जो है वो इन जो है वो जैसे सफिक्सेस और ये बहुत सारी हमने चीज़ें पढ़ी. डेरिवेशनल ड्राइव कैसे होते हैं वर्ड्स जो है वो हमने पढ़ा. सो दिस इज टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स in detail is there in our lecture you could watch today. And here is differences. Allophones or allomorphs में difference क्या था? So these were some of the key points discussed in our today's lecture. Hopefully, this would have been very helpful for the students of linguistics and MA English. I am I'm trying my level best to make you understand different terminologies into linguistics. Those students, those Pakistani students, they have been learning an introduction to linguistics. तो आज का जो है वो लेक्चर हमारा मॉर्फीम्स के ऊपर था. I am hopeful that this would have been a very informative and guiding, helping lecture for all the students. Thank you very much. Assalamu alaikum.